फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। Hello everyone, you're watching Cricket Next. I am Surama Kaushik, and today I have come up with a question. This question is very important, especially now when be going for the third test match between India and England. Question is about Shreyas Iyer. Is he injured or dropped? Well, Sahil Malhotra did a story on Cricket Next earlier today, and let's hear it out from him what he has to say about Shreyas Iyer, and obviously from Vineet Ramakrishnan as well. What are his thoughts about Shreyas Iyer and the others as well? Whether they should be there in the team or not be there in the team. First of all, Sahil, what's the latest update about Shreyas Iyer? There are two questions, First one is to pick or not to pick Shreyas Iyer. The second one is he injured or there are talks about him getting dropped from the team? See, first things first, from what I've heard in the morning is that, he was in the firing line because of the poor run with the bat. Injury, niggle, all that is secondary, but he was in the firing line for what he has been doing with the bat, the ordinary performances in the last 13 innings where he hasn't breached the 50-run mark yet. So, and, I categorically asked a couple of people that, there were suggestions that he's facing some discomfort in the groin and the back injury could have resurfaced, for which he underwent surgery last year. So I was categorically told that he has faced 50 deliveries in the 3 out of the 4 innings, and that athletic Ben Stokes run out we all saw in the second test. So those suggestions were kind of dismissed by the person I was talking to in the Indian Cricket Board, and I was categorically told that he's dropped because the weight of runs is not behind him. The back spasm could well be behind him, but the weight of runs is certainly not behind him. And he was walking a tightrope. यार मतलब आप उसकी performances देखिए right from the South Africa series. Even before that, the little he played in the Border Gavaskar Trophy, the runs weren't there. There was always that question that Shreyas bats with intent, but that intent hasn't been seen yet because the runs haven't been there. So Shreyas Iyer is already facing stiff competition from Rajat Patidar, Sarfaraz Khan, who's already in the squad. Then there's a possibility of KL Rahul coming back into the mix. So when all these things kind of add up, you don't see a spot for Shreyas Iyer, and that could well have been the case with Shubman Gill too. But he responded in fine fashion with 100 and has kind of secured his spot at least for this series. Now with Shreyas, runs nahi the boss. So I think that is the call which has been taken, and that is why there are suggestions roaming around right now that he could well miss the bus for the last 3 tests. Yeah. Well, Shreyas Iyer, considered as one of the best Indian batters of play against spin, has only scored 27, 29, 35 and 13 in the first 2 test matches. Vineet, what's your take? Should Shreyas Iyer be there in the team for the upcoming test matches or not? Because a lot many people say, if not Shreyas Iyer, then who will play spin? And all of those questions are there. So what's your take? Look, as I had mentioned in the previous live as well, that if it was a choice, I'd probably stick with Shreyas Iyer, give him the longer rope. Now the scenario has changed. Now the talks are there about his fitness, and as Sahil mentioned in his report, as he reported, that anyway he was told that boss, you are on a very thin rope there, and he was given a kind of ultimatum that you need to score runs, and that is there. I mean, you can't look beyond that factor where he has started well with the bat, but he has just thrown away his wicket. All the 4, I think out of the 4 dismissals, 3 dismissals where he was trying to go for his shots. He was not trying to build that innings. And I'll come back to that point where it's not a case where you ask him to go back to Ranji and rethink what you want to do. He just has to recalibrate whenever he reaches his 20s and 30s. But that is now out of the question. Now the question is he injured? If he is injured, who comes in? Is he dropped or not? Look,
in Indian cricket, I think the word drop has gone out of fashion. Anybody who wants to be dropped conveniently gets a back spasm or neck spasm or some nickel Yeah, here and there, yeah, and they yeah, conveniently are, sidelined. It could be one of those things, but look, he already had a back issue. He underwent a surgery, so there could be a plausibility in terms of what he is talking about, that he might be feeling some stiffness or he might be feeling some pain here and there. But to Sahil's point again, I mean, if you are saying that after 30 deliveries, I'm not able to, take that forward defense that well. Boss, you were fielding there for a long while, and you're like very good, in that field, that Ben Stokes or not, that Sahil mentioned. So it's not, I think it's very dicey for me to really say. Sahil would probably give you a better idea, and he has given that idea in the yep, report itself. But for me, it's like very yeah, conveniently you could say that if you want to drop a person, you just don't say he's dropped. He has some nickel here and there, and conveniently he goes out. yeah. But Sahil, the biggest question here is who in place of Shreyas Iyer? I think we don't need to look too far ahead for that or too far back for that. I think KL Rahul, as I mentioned in the report, the delay in the squad announcement has been because of the clearances awaited from the BCCI medical team and the NCA for both Ravindra Jadeja and KL Rahul. And when KL Rahul comes back into the mix, you didn't have a space for Shreyas Iyer any which way. So I think all this kind of adds up now. All this makes sense, and I can kind of wrap my head around the whole injury narrative floating around for Shreyas Iyer. Because as Vineet said, and I'll 100% agree, I think it's a very convenient usage when it comes to chopping and changing of your playing 11 or the squad for that Yeah, matter. Those last moment spasms, those last moment niggles kind of come out of nowhere. एंड विद श्रेयस अगेन, जब मैं सुबह बात ही किया ना, तो मेरे को वो बेन स्टोक्स का एकदम रनआउट मुंह पे चाटा पड़ा सामने से, ऐसा लगा मुझे जब मैं बोला कि नहीं वो स्टार्ट्स तो मिला, ये मिला, वो निगल का बात हो रहा है, तो वही बोले निगल हो रहा है तो ऐसा क्या, वन हैंडेड एकदम एथलेटिक फील्ड के अंदर था, तो वहां पे मतलब आप लोग ये सारे क्वेश्चंस क्यों नहीं पूछते हो? तो अगेन फॉर मी, फ्रॉम व्हाट आई हैव रिटन, आई थिंक ही इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द स्क्वाड, एंड द स्क्वाड if not today should be out tomorrow, because with the BCCI you never know, but there's a strong feeling that it could come today, and the only delay is because of Ravindra Jadeja and KL Rahul getting those clearances, and they do want their availability for the next 3 tests. That is why they are willing to wait the last minute before announcing the squad for the remaining 3 tests. And when KL Rahul comes back, Shreyas ka jagah nahi hai. Rajat Patidar has done well in the one of the 2 innings he played. There's already a Sarfaraz Khan warming the bench, and it was very interesting to see that Saurabh Kumar has been playing Ranji Trophy for UP now, so उसको इंडिकेशन तो नहीं मिल गया कि जड्डू वापस आ रहे तो आप यूपी के लिए वापस चले जाओ, बिकॉज सौरभ कुमार, सो अगर आज मैच स्टार्ट हुआ है 9, 10, 11, 12 तारीख तक, he'll be playing Ranji Trophy. And Avesh Khan interestingly hasn't turned up for MP yet. आज के गेम के अंदर he wasn't in the 11, he isn't in the 15. So I am kind of putting 1 plus 1 together that Avesh could well be in the squad, and Saurabh Kumar could well not be picked, क्योंकि वो रणजी ट्रॉफी खेल रहा है आज यूपी के लिए. We also have with us Network 18 Group Sports Editor K. Srinivas Rao. Srini, welcome to the live session. हम लोग बात कर रहे थे अभी श्रेयस अय्यर के बारे में, काफी ज्यादा बातचीत हुई. स्कोर्स के बारे में तो हमने ऑब्वियसली डिस्कस किया कि पहले 2 टेस्ट मैचेस में कैसे उन्होंने खेला है, बट द क्वेश्चन इज, do you think Shreyas Iyer should get more chances in this series or not? Well, first of all, I'm sorry I had a bad internet connection. I'm facing some technical issue. Shreyas, I mean, I heard Vineet say something on the lines of, when was the last time that you heard the word dropped in Indian cricket? The point is, don't bring conversations like, back spasm hai, groin spasm hai, kya spasm hai, जिस तरीके का आप रन बना रहे हो, वो व्यूअर्स को स्पैजम होना चाहिए, आपको नहीं. So it's a performance driven this thing. Obviously the team has not been named yet, and he obviously has an indication of what is going to happen, based on which that story has come out that you've conveniently dropped it. It's not a new story in Indian cricket. I've seen this for years and years and years. Like, वो मुझे याद है 2004, 5, 6 सौरव गांगुली के टाइम पे वो कोई किसी को मतलब कल ड्रॉप होने वाला है, आज बुखार आ जाता था, तो वो अभी तक बदला नहीं है इंडियन क्रिकेट में. But that said, writing is on the wall. I mean, you have a Rajat Patidar. But although
here is my thing. Like, Rajat has obviously given them the confidence in the middle order. The way he batted in this test match, probably that is giving them the confidence that Shreyas ke jagah, you have enough in the batting order if KL Rahul comes back, and probably whatever is the case with Ravindra Jadeja. But that's not the point. Point is Virat is not coming back for the next two matches, right? तो उसमें आई डोंट नो कि 15 के बाहर श्रेयस को रखना इज इट अ गुड आइडिया और अ बैड आइडिया आई डोंट नो और मे बी इज इट दैट 11 में नहीं है तो 15 में भी जगह बनती है आई हैव नॉट बीन एबल टू रैप माय हेड अराउंड दैट कि बिकॉज विराट इज नॉट देयर सी अगर राइट नाउ अगर विराट और केएल दोनों अगर आ जाए 11 में तब आप यू टेक योर रिस्क्स एंड but bang in the middle of the series and you're taking that call, I don't know if it's 100% a very practical call. That's the only thing that is. But back spasm and all that I'm not believing. आपको clearly बोला गया कि you don't belong and that's why you're taking a break. And logic only dictates that Shreyas should have been there, considering विराट इज नॉट देयर. तो मुझे वो एक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर में चाहिए. उसको ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसे लग रहा था कि probably they would have continued. I beyond that I have performance wise अगर आप मेरे से पूछोगे तो really needs to rest, considering some of the manner in which some of the dismissals came through, kind of wasn't very convincing. Srini, we discussed a lot about this word dropped and also the word injured. I want to know from you, क्या दिक्कत है simply ये बोलने में कि we have dropped this player? Because आपने बात करी काफी टाइम से ये चलता आ रहा है कि आप बहुत conveniently बोल देते हैं कि back spasm है या unwell है या fever है. So what is the problem? Is there any problem बोला तो किसी in saying कि this player has been dropped? 1 सेकेंड, बोला तो किसी ने अभी तक ये भी नहीं है ना कि इंजरी है. वो तो जो भी है ये सोर्स बेस्ड स्टोरी थी, वो इंजरी वाली भी स्टोरी भी तो सोर्स बेस्ड थी. प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि ड्रॉप है या इंजर्ड है. प्रॉब्लम इसमें है कि सामने वाला बोल ही नहीं रहा है कुछ. I was chatting with someone, we were generally discussing the big picture here. The real mess lies in the fact that there will be no clearing of the air in, when a story like this comes out, that suddenly your middle order batsman after lack of performances, whatever, when his place in the squad is under scrutiny, suddenly he develops a spasm. There's another story that comes through and says that no boss, this is not just about back spasm, it is his performances that have led to him being ignored for the next remaining whatever 2 or 3 matches. That's not the point. The point is at no juncture are we expecting the Indian team management or whatever, BCCI, selectors, whoever, to put in any kind of clarification, clear the air. That is not happening in Indian cricket. So many things are being just shoved under the carpet for just simple lack of communication, So I'm not even, हो सकता है tomorrow, हो सकता है सही में कुछ spasm हो सकता है जो साहिल कह रहा है वो सही हो, बट काम किसका है? देखो, रिपोर्टर का काम है, रिपोर्टर तो देख रहा है बाहर क्या हो रहा है और वो अपना वर्जन लिख रहा है, ठीक है. बट एक समय तो ये भी होता है कि एस्टैब्लिशमेंट फेडरेशन जो है उनको भी तो सामने आके बोलना पड़ेगा ना कि क्या हो रहा है उनके इकोसिस्टम के अंदर. वो कोई जानना ही नहीं चाहता है. अभी देखो, मैं मान के चलता हूँ, योर हार्ट इज इन द राइट प्लेस, यू वांट टू डू ऑल द राइट काइंड ऑफ थिंग्स फॉर इंडियन क्रिकेट, you like kind of want to put your best foot forward at all times. Doing it is one thing, and letting people know that you want to do the right thing is another thing, and both are equally important. In any sphere of life, not just in sport, but in any sphere of life, doing the right thing is one thing, and letting it be know that you are someone who believes in doing the right thing is also equally important. So from a BCCI perspective, this has been perennially lacking, and it's unfortunate. It's unfortunate that simple things do not get communicated. Whose fault is it? Eventually वो प्लेयर को भी नहीं समझ रहा है. ये प्लेयर को भी लगता है कि आज उसको समझ में नहीं आ रहा है. Tomorrow even the player is going to suffer the consequences of this kind of non-communication. It's not healthy for anybody in the ecosystem. Any ecosystem, any professional organization
should and must work on the simple philosophy of communication, which is totally missing in Indian cricket. आप देखो ना, Yeah. आप कहीं होता है क्या ईसीबी और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, बेंचमार्क्स है, राइट, ग्लोबल बेंचमार्क्स है इन क्रिकेट। देखो ना उन लोग को कैसे फंक्शन करते हैं वो। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को देखो, आप न्यूजीलैंड क्रिकेट को देखो, न्यूजीलैंड वन टाइनी नेशन है, वो कितना मतलब उनका ये, उसमें भी देखो कितना प्रोफेशनली वो हैंडल करते हैं हर छोटी सी क्वेरी को, हर छोटे से डेवलपमेंट को। हम क्यों नहीं सीख सकते, मेरे कभी समझ में ही नहीं आया। शायद आया है पर बोल नहीं पाऊंगा। Also, press conferences have become very on and off. कभी होती है टीम अनाउंसमेंट के टाइम, कभी नहीं होती हैं। कभी आपकी जो प्रेस रिलीज आती है उसमें आप वन लाइनर्स ऐड करते हैं कि क्या हुआ है प्लेयर को, कभी आप कुछ भी नहीं बताते हैं। सो ऑब्वियसली दैट्स वन एरिया जहां पर हम लोग ये जो डिस्कस कर रहे हैं वहां पर सवाल उठने चाहिए, एंड शुड इवन लुक फॉर आंसर्स। यस श्रेणी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से याद आया, मैं उस जमाने में रिपोर्टिंग शुरू किया था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब सिलेक्टर्स अंदर बैठे रहते थे और स्क्वाड सेलेक्ट होते रहती थी ना, तो वो सिलेक्शन रूम के बाहर ऐसे 20 से 25 मतलब बड़े बड़े दिग्गज जर्नलिस्ट ऐसे दरवाजे के बाहर खड़े रहते थे। वो स्क्वाड सेलेक्ट होने के बाद अगर समझ लीजिए उन्होंने कुछ कंट्रोवर्शियल डिसीजन लिया है, कहीं एक वेस्ट इंडीज एक प्लेयर चले गए थे सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में, बड़ा फेमस किस्सा है। तो तेंदुलकर को पता है भाई ये कहाँ से आ गया, तो वो तो बड़े फेमस किस्से हैं। तो जब वो सिलेक्शन कमेटी होती थी, अंदर मीटिंग होते रहती थी ना, तो वो लोग आधा तो ये सोचते थे कि बाहर जाके अभी इनको बताएगा कौन। ये अंदर जब बुलाया जाता था उनको, तो ऐसे क्वेश्चन आंसर सेशन होते थे, तो वो उसको पूछा जाता था। मतलब मुझे अभी भी याद है, चंदू बोर्डे सेलेक्टर थे इंडियन क्रिकेट के। सॉरी, एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ। चंदू बोर्डे सेलेक्टर थे, नेशनल सेलेक्टर इंडियन क्रिकेट के। तो एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट है, ही पास्ट अवे, बहुत बहुत बड़े जर्नलिस्ट टाइम्स ऑफ इंडिया के, प्रदीप विजयकर करके। सो ही काइंड ऑफ वो बैठे थे। हर हर जो 15 आपने सेलेक्ट किए ना, वो हर 15 वो आपसे एक्सप्लेन कराते थे, अच्छा ये बताओ क्यों, मेरे को आप एक्सप्लेन करो ये क्यों, क्या किया है वो। एंड अगर वो सेलेक्टर ने गलती से अगर चूक गया और उसको पता नहीं रहा कि इसने रणजी ट्रॉफी में क्या किया है या दिलीप ट्रॉफी में क्या है, तो मैं बता रहा हूँ ना, उसकी खैर मना लो। तो ये तरीका होता था। वो अकाउंटेबिलिटी वो सब तो छोड़ ही दो, जाने दो। मैं कह रहा हूँ कम से कम भाई वहां स्टेज पे खड़े रह के माइक पकड़ के 15 गिना तो दो, और जो नहीं गिना है उसको बता तो दो कि क्यों नहीं है, कम से कम बेसिक तो कर लो काम। हो क्या रहा है। हाँ, तो बट दिस इज चेंजिंग, इट्स चेंजिंग। अभी वो एंड अक्सर हम ये डिस्कस भी करते हैं लाइव शोज में, साहिल और विनीत, क्योंकि दोनों अक्सर जाते हैं जब कभी टीम अनाउंस होती है, और दोनों बताते हैं कि इट्स अ रेयरिटी कि आपको कम देखने को मिलेगा कि अगर कोई टीम अनाउंस हो रही है तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वहां पे आपके क्वेश्चंस को एड्रेस किया गया है और आपको आंसर्स मिले हैं। विनीत हैज समथिंग टू से ऑन दिस। यस विनीत, प्लीज गो अहेड। No, just add on to that what Srini mentioned about the lack of communication. My thing is, चलो press conference तो दूर की बात है, हमें पता है कि selectors are going to convene for a meeting, होने वाला है। I'm saying what is the harm? क्या लगता है बताने के लिए कि यार selectors Friday शाम को convene करेंगे, बस बता दो और कुछ नहीं करना। You know that convene हो रहा है, आपको एक होटल रूम जो भी है बुक करना पड़ेगा, फ्लाइट सब करना पड़ेगा, so you know। ऐसा तो नहीं है कि चाय पी रहे समझो नहीं आज सिलेक्शन कर लेते हैं चलो, ऐसा तो नहीं है। Even that communication is not happening. The kind of speculation, like Sahil himself did that story, 24 to 48 hour के बैच में Sahil is fretting यार 48 to 49 तो अवर हो गया तो मेरे स्टोरी का क्या होगा। वो 24 to 48 वो जो टीम नेम होने वाली, वो टीम तो रेडी पड़ी होगी। मेरे को एक बात बताओ, उनको मतलब आज पता नहीं है कि श्रेयस केएल राहुल फिट है या नहीं, बट आपको कल पता चल जाएगा। इज दैट व्हाट यू ट्राइंग टू टेल मी? लाइक आप आज आपको आइडिया ही नहीं है कि क्या केएल राहुल, हाँ सॉरी, और ये आप 19 इतना चलने लगा है ना कि आप बार नहीं, और आप 1950 में तो जी नहीं रहे हो ना कि वहाँ एनसीए से किसी ने चिट्ठी लिखा है जो ट्रक में आ रहा है बॉम्बे की तरफ या अहमदाबाद की तरफ, वो भी तो नहीं है ना, फोन करके तो पूछना है आपको। तो ये मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि लाइक आज आपको पता ही नहीं है कि कल क्या होने वाला है। तो ये मतलब अभी वो साहिल ने जो स्टोरी लिखा वो सिलेक्शन, वो तो ऑब्वियसली टीम तो रेडी है, ऐसा नहीं कि टीम रेडी नहीं है।
अब वो पता नहीं किसी पंडित ने बोला होगा कि मुहूर्त ठीक नहीं है, आप गलत अनाउंस कर देना, भगवान जाने क्या तरीका है, मुझे तो समझ में नहीं। लॉजिक वॉजिक की बात मत करना है, लॉजिक वो सब बाहर रख के आना चाहिए कमरे में, यहाँ कोई लॉजिक वॉजिक का काम नहीं है। बिल्कुल। आज तो चलिए हमें नहीं पता है अवेलेबिलिटी के बारे में केएल राहुल और जडेजा की, साहिल हमें अच्छी तरह से बता सकते हैं कि क्या अपडेट है, प्लस क्या कल पता चलेगा उनकी अवेलेबिलिटी के बारे में? टेक्निकली तो आज ही पता चलना है, मतलब मुझे तो सुबह यही बोला गया था शाम तक सब कुछ फैसला वैसला हो जाएगा, तो शाम को फैसला होगा तो रात को 10:30-11 के आसपास रिलीज आपको आ जाना चाहिए। बट अगेन अब तो मैं होप छोड़ चुका हूँ यार, मतलब इनकी टाइमिंग की और इस सब की, मतलब 72 घंटे से तो मेरे को ही समझ नहीं आ रहा वो कौन सा घंटा सही बैठेगा, तो इसीलिए घंटे लिखने ही नहीं है, दिस मंथ करके मैं स्टोरी करनी है, टीम टू बी रिलीज मैं दिस किसी मंथ। से मैं दो लोगों को सुन रहा था, एक पूछ रहा था कि लाइक अरे यार ये क्या बात हो गई, इतने रात को क्यों भेजते हैं टीम ये, तो वो हाँ दूसरा कहता है कि ये रुके होते हैं कि सब सो जाए तो फिर अनाउंस करते हैं, जिस तरीके के स्क्वाड आजकल अनाउंस होते हैं वो इसीलिए रुके हैं कि लोग सो जाए तो फिर अनाउंस करते हैं चुपके से। And the frustrating part is the bit, both me and Vineet attended that press conference before the Asia Cup. Yes, before Asia the Cup, Asia yeah. Cup, जब squad announce हुआ था, hearing the clarity of thought with which Ajit Agarkar and Rohit Sharma both were talking, explaining, मतलब आपको उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से अंदाजा लग गया था कि रविचंद्रन अश्विन का आपको आइडिया लग जाएगा 50 ओवर वर्ल्ड कप में। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई मिस्ट्री लेके बैठे हुए थे, वो दे वर आर्टिकुलेट इनफ, दे वर एक्सप्लेनिंग देयर थॉट्स, हर चीज के पीछे। जैसे श्रीनी ने कहा कि पहले जब होता था कि लॉजिक दिया जाता था, तो जब लोगों ने पूछा 60-70 जर्नलिस्ट थे उस दिल्ली के 5 स्टार होटल में, सबने अलग अलग सवाल पूछा, तो आपको भी एक सिलेक्टर्स के माइंडसेट में पर्सपेक्टिव मिलता है, यू गेट अस अंडरस्टैंडिंग कि किस डायरेक्शन में टीम का बस ड्राइव कर रहे हैं। बट अभी तो इट्स लाइक एनीबॉडीज गेस ना, मतलब अभी तो कुछ भी हो रहा है ना। या और See, लास्ट आई थिंक वो यश बहुत क्लियर है, अगर किसी ने खेला है एक टॉप लेवल पे क्रिकेट खेला है, क्रिकेटर रह चुका है ना, आप उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दो, वो कहीं ना कहीं आपसे लॉजिक बात कर ही लेगा। हाँ मतलब आप चेतन शर्मा को बिठा दो तो बात अलग है, बट आप किसी ढंग के इंसान को आप बिठा दोगे तो वो कहीं ना, क्रिकेट जिसने टॉप लेवल क्रिकेट खेला है वो करेक्ट। कितना भी सर्कमवेंट करे किसी सब्जेक्ट को, बट वो क्रिकेट खेला है तो उसको भी जान, उसको उसकी खुद के दिमाग में उसको पता है कि ए बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट आई कांट स्ट्रेच समथिंग व्हिच इज नॉट करेक्ट, तो वो घूम फिर के लॉजिक पे आ ही जाएगा। So and then with due respect to Ajit is somebody who's like good at communicating. या वो थोड़ा बहुत वो क्रिकेट वेबसाइट्स के लिए भी जब वो बात करते हैं, अपने व्यूज प्रेजेंट करते हैं, even in social circles, he's like quite a thing. He knows how to communicate with people, talk well, speak well. So he's confident. So obviously when a guy like that is sitting and he's been a good cricketer, like so वो उसको he's an all rounder, तो वो ऐसा कुछ देगा ऐसा जो आप कह सकते हैं यार ये हवा में बात नहीं कर रहा है, राइट? या आप बिठाओ तो सही, आप किसी को सामने तो लाओ, आप कुछ नहीं तो आप एक जूम कॉल करो। तो बीच में वो गंद मची गई थी, वो इसमें पैंडेमिक जब चल रहा था, वो जूम कॉल पे होते थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें दुनिया भर का वो कैसे कैसे अखबार आ जाते थे, माँ कसम बदला लूंगा, खून का कलम, ऐसे ऐसे अखबार मैंने कभी सुना ही नहीं था, मतलब सब घुस जाते थे, यू नो। सो तो उसको इसीलिए उसको बंद करना पड़ा। मुझे लगा कि फिजिकली चालू करेंगे, ये तो वन स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेप्स बैक, अभी क्या बोलना। आई थिंक मैं कल या परसों वो एक बीसीसीआई का ईमेल आता है, उसमें एक न्यूज़लेटर आता है। अब आजकल एक कुछ नया शुरू किया है, इन लोग ने न्यूज़लेटर भेजते हैं। वो न्यूज़लेटर पढ़ के मेरे माइंड में आया है, व्हाई कांट यू हैव अ एनसीए न्यूज़लेटर वेयर एवरी मंथ यू आर गिविंग एन अपडेट अबाउट हु इज चेकिंग इन द एनसीए, हु इज चेकिंग आउट ऑफ एनसीए। मतलब वहां पे कोई अलग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट तो नहीं चल रहा ना जो आपको वर्ल्ड सीक्रेट बना के रखना है। मतलब आप एक बेसिक अपडेट, जैसे आपने एक अपडेट दिया था, मेरे को याद है जब ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल के ऊपर 1-1 पैरा ईच आया था, मेडिकल अपडेट करके। बीसीसीआई ने इतिहास में पहली बार एक मेडिकल बुलेटिन इशू किया था। व्हाई कांट यू हैव अ एनसीए बुलेटिन यार, वेयर यू एक्सप्लेन हु इज चेकिंग इनटू द नेशनल क्रिकेट एकेडमी, चेकिंग आउट, डूइंग व्हाट। मतलब क्या इतना सस्पेंस और क्यों, मतलब किसका बेनिफिट हो रहा है इस सस्पेंस से, मुझे नहीं पता। ऐसा तो है नहीं कि एनसीए के अंदर नॉर्मल पब्लिक 150 रुपए का टिकट खरीद के चली जाएगी। आप तो जर्नलिस्ट को नहीं जाने देते, तो पब्लिक कैसे ही जाएगी ना। तो फिर मतलब क्या प्रॉब्लम है वहां पे ये सब करने का, मतलब बहुत इजी है और ये स्पेकुलेशन खत्म ही कर देगा। Exactly. Okay, so far we have They love discussed it, about Shreyas Iyer, Jadeja, and KL Rahul. Srini will come back to that topic, but Vineet, just before you start with whatever you want to put
in front of us. I want to know from you. Can you hear me? Am I audible to Yes, you? yes, I can. I can. I Yeah, yeah. can. I can. Yeah. I want to know from you about Jasprit Bumrah because there are various reports, that whether he should be rested for any one of the test matches or not. What's your opinion on that? And especially, there are a lot of questions around should he be rested for the fourth or the fifth test match? Because right now there are reports that he'll be playing the third one, so people have gone a step further and they're discussing the fourth and the fifth one. Forget about my opinion. Fact of the matter is, Jasprit Bumrah is the leading wicket taker in the series so far, right? And Uh-huh. this was a series Yeah. that touted to be the spin dominant one. Spinners would go through teams, but it is a fast bowler who is at the top of the wicket taking chart. How can you Hmm. even think of resting that person and the series is 1-1? It's absolutely ridiculous. The reports and whatever it is, he has to be there. It's Rajkot. It's going to be the flattest wicket in the series. And if you want somebody to exploit or even have some advantage in terms of a bowling unit, that is Jasprit Bumrah. There is no way you're dropping him. You are coming off an 8 or 9 day break. Hmm. What Yep. what more rest does he need? Uh, Hmm. you know, that's just absolutely ridiculous. ये There's जो no point. सवाल है ना जसप्रीत बुमराह वाला Hmm. कि क्या वो अवेलेबल रहेंगे इस मैच के लिए, वो इट्स लाइक Hmm. अकिन टू हाउ वो आप एक अंधेरे टनल में चल रहे हो, आपके हाथ में एक ही दिया है, वो एक ही Hmm. दिया है जिसके कारण आपको कुछ दिख रहा है, वो एक दिया है जसप्रीत बुमराह है। आप उसी को बुझाने के चक्कर में लगे पड़े हो। मतलब ये उस तरीके का सवाल है। Hmm. नहीं पर विनीत जहां तक आप अगर रिपोर्ट्स पढ़ें और सारी देखें जो चल रहा है आजकल उसमें बहुत ये भी एक ट्रेंड है जो कि उन्होंने खुद कहा था कि हमारी रोटेशनल पॉलिसी है। जब उनसे सवाल पूछा गया था सिराज के ऊपर उसके बाद से ये होने लगा कि क्या ये रोटेशनल पॉलिसी जसप्रीत बुमराह पर भी अप्लाई होगी कि नहीं होगी। और उसके बाद से आई थिंक दिस डिबेट हैज गॉन टू सम अदर लेवल कि फिर उनको कब रेस्ट किया जाएगा, क्या वो फोर्थ फिफ्थ खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। Look, in fact, that question of मोहम्मद सिराज को आपने रेस्ट हम्म। करा के मुकेश कुमार को खिलाया था वाइजैक में, that was my question. In fact, I had put that Okay. question up, and after what Rahul Dravid told me, I realized the way press conferences जिस तरीके से रेटी हो गई हैं, these post day pressers also कोई value नहीं रह गया for us journalists. It's just nothing. It's just kind of a thing कि आ गए अपना बोल के चले गए. There's nothing. I mean, they are just passing the buck kind of thing. कोई आपको प्रॉपर आंसर नहीं मिलेगा. व्हाट इज रोटेशन? क्या रोटेशन की बात कर रहे हैं यार? टेस्ट मैच आपके हर दूसरे महीने टेस्ट मैच खेलते रोटेशन कराने के लिए, आई मीन रिडिकुलस है, हो ही नहीं सकता है. मोहम्मद सिराज को आप ले गए थे, इफ आपको रोटेशन दिमाग में था, आप हैदराबाद नहीं छोड़ देना उसे, आप उसको वाइजैक लेकर गए, वहां पे आपने बोला कि नहीं भाई अब तुम वापस चले जाओ. सो देयर इज नो प्लानिंग, देयर इज नो थिंकिंग ऑन दोस लाइंस. एंड जसप्रीत बुमराह, he is your prime bowler yaar. I mean there's no way. अब reports की बात है, again Sahil would concur with this. अब report कह रहा है कि Shreyas Iyer injured है. You're going to believe that? We are not. None of us. Cricketing logic थोड़ी चीज होती है. And Cricket Vineet, देखा है, देखा हुआ है हमने. just to add to that Siraj point, matlab, who knows how much truth is behind the Siraj resting, boss? Exactly. Maybe he was dropped कोई because he truth was नहीं है. looked off color. That's Maybe they also want to very try important. Mukesh Absolutely. Kumar, but they'll never come and acknowledge the fact that we have dropped Mohammad Siraj. वो गुडी गुड Absolutely. विकेट चलता हुआ आ रहा है, whether it's rested, whether it's dropped. So I don't buy into these arguments. And workload management, जसप्रीत बुमराह को आप पूछोगे वो इंडिया में टेस्ट क्रिकेट खेला कितना है यार, वो खुद खेलना चाहेगा. और क्या? और किसको मैनेज करना है? आईपीएल को अल्टरनेट गेम खिला दो यार. लेकिन ये 5 टेस्ट खेलना मैचेस चाहेगा या नहीं चाहेगा भी बात की बात है. राइट नाउ हेडिंग इनटू राजकोट, ही इज द फर्स्ट नेम ऑन दैट टीम लिस्ट यार. यस. वेयर इज Exactly. और द लॉजिक हियर? फोर्थ और मतलब फिफ्थ टेस्ट तो भूल ही जाओ. फोर्थ और फिफ्थ और टेस्ट नहीं, के बारे में तो बात की बात फोर्थ है. टेस्ट की बात अभी हम कर रहे हैं 1-1 पे. खुदा ना खास्ता राजकोट में वी आर ट्रेलिंग 2-1, फिर आप कहोगे उसको बिठाना है रांची में कि नहीं? फिर तो ऑल द मोर रीजन ही शुड प्ले यार. मतलब आई थिंक बुमराह शुड प्ले 5 गेम्स, नो डाउट, क्योंकि फोर्थ और फिफ्थ टेस्ट मैच में भी काफी गैप है. सो ही विल गेट इनफ टाइम टू काइंड ऑफ ईज हिज सोर मसल्स. लेट हिम प्ले 5 टेस्ट मैचेस यार, एंड देन देयर इज मेरे इनफ ख्याल से गैप. इन्हीं सवालों के कारण बीसीसीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद कर दिया. और इन्हीं सवालों को हम कंटिन्यू करते और देखते हैं कि लोगों का क्या कहना है. श्रेणी, just before हाँ. before you get to the viewers rapid fire round, I have a question both for Srini and Sahil. This came up to me. We've seen this thing with Shreyas Iyer now, जहाँ पे आपको लगा कि he was under the line, under fire.
आपने कह दिया, यू कन्वे टू द मैनेजमेंट, यार मेरे को बैक स्पैज़म है, ये है वो है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू इक्वेट दिस टू दैट ईशान किशन सिनेरियो वेयर he has not played 5 Ranji games so far. After being told, राहुल द्रविड़ ने कैटेगरिकली बोला, भाई आप क्रिकेट तो खेलो, फिर हम आपका देखेंगे कैसे करें. नहीं खेला है. इज इट अ केस, श्रीनी एंड साहिल, वेयर आई मीन फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर सीइंग दीज प्लेयर्स जिनको लग रहा है कि यार उनका कुछ हो रहा है, दे आर अंडर द फायर, कि खुद एक डिसीजन ले रहे हैं कि नहीं यार थोड़ा हम बैक सीट पे चले जाते हैं, हम अपना देख लेंगे, थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं. डू यू थिंक दीज प्लेयर्स आर गेटिंग टू मच, what you call, over their head when it comes to these kind of things, and they're not just towing that management line, so to speak? I may be wrong here. Just wanted your thoughts on this. Ki this could be a worrying, far more worrying sign, where आप एक प्लेयर को कह रहे हैं कि यार आप फॉर्म के बेसिस पे आपको ड्रॉप करें, देन ही गोज अहेड एंड सेज कि नहीं मेरे को तो ये दिक्कत है, मैं ब्रेक लेना चाह रहा हूँ, या मेरे को बैक स्पैज़म है, या एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. I don't know. मतलब maybe it could be a bit of both, right? With Ishan Kishan, it was a different scenario. मतलब Ishan had all the reason to be, frustrated, to be kind of let down with what happened in South Africa, because you could took him as a wicket keeper. He was a wicket keeper in West Indies. KL Rahul walks into the 11 out of nowhere, Test 11, I'm saying. Then he decides to keep wickets. He's your frontline keeper there. Ishan Kishan is not in the mix. So Ishan had every reason to be felt let down कि बॉस मेरे को खेलना था, मैं नहीं खेला. उसने मेंटल ब्रेक मांगा क्योंकि हो गया, दिमाग का दही हो गया. मैं ईशान के शूज में रह के एक बात कर रहा हूँ. बट लुक व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट. ही टुक अ ब्रेक, 2-3 हफ्ता ब्रेक ले, 1 महीना ब्रेक ले. बट आई थिंक वेयर ईशान काइंड ऑफ मिस्ड द बस वाज नॉट प्लेइंग इवन one of the Ranji games which Jharkhand played. Exactly my point. 5 मैचेस था. It's been five matches now. एक तो खेल लेता, एक खेलने में क्या दिक्कत था. एंड श्रेयस का रहा. अब श्रेयस का भी वही विनीत स्पेकुलेशन वाला बात होगा, बट अगर मैं श्रेयस का सोचूं, हो सकता मैनेजमेंट ने बोला बॉस वी हैव टू लाइक काइंड ऑफ लुक अहेड ऑफ यू नाउ, एंड देन ही सेड दैट यस इट्स गुड क्योंकि मेरे को ऑलरेडी इशू है. मतलब इसको कैसे काइंड ऑफ वो करे, लाइक हाउ टू मेक सेंस ऑफ द होल सिचुएशन व्हिच इज काइंड ऑफ अनफोल्डिंग इन फ्रंट ऑफ अस. बट इट विल ऑलवेज रिमेन अ मिस्ट्री. जितना मिस्टीरियस था मोहम्मद सिराज का सेकंड टेस्ट में रेस्ट होना, सो टू से, उतना ही मिस्टीरियस रहेगा श्रेयस अय्यर का ड्रॉप होना, और उतना ही मिस्टीरियस रहेगा केएल राहुल का ईशान किशन को पिक करना फॉर द विकेट कीपर स्पॉट. ये मिस्ट्रीज बढ़ती रहेंगी. सो ओके, और मिस्ट्रीज मुझे लगता है और भी बढ़ सकती है. यस श्रीनी, प्लीज गो अहेड. No. Yes, Sri. So, am I audible? I'm audible, right? Yes. Yeah. You are. All right. Yeah. Okay. So, you got to see this. What Vineet asked, you got to see this in two different ways. One, obviously, is what is in front of you. The facts that you got to pick from, and one, obviously, is your understanding of the ecosystem and where you're coming from in terms of kind of trying to see, engage. I guess the question that Vineet put forth had two sides to it. One is in the case of an Ishan Kishan, or whether it's a Shreyas Iyer with what has happened today. What is the reality? What are these players up to? What kind of a statement is being given out? And then the other bit is obviously kind of what is the big picture to this. So let me start with the reality bit first. Now, how old is Ishan? Ishan must be what, 24, 25, I guess, not more than that, right? 25, it's around 25. 25. Now, please understand that you're talking about a young fellow who just kind of one IPL season ago, one and a half years ago, got sold in the IPL for what, around $2 million. 16, 17 crores, yeah. 16 crores, yeah. 15 crore, 15 CR, yeah. Now, listen. You're at the end of the day, you're only too human. Okay, you're only too human to keep your mental state of mind strong as ever, and kind of thought process being extremely clear. Look at us, look at the four of us. We, in whatever we do, there are times when we may lack judgment, right? We at any given point in time, all of us, it's human nature to look for some sort of a support at all times, because we're all potentially capable of losing our path from time to time. You got to expect that a 25-year-old is also going to happen to a 25-year-old. आप वो मिलिट्री स्कूल से, आर्मी स्कूल से नहीं आया, आर्मी ट्रेनिंग करके वो नहीं आया कि सुबह 5 बजे उठना है, 5 साढ़े 5 बजे खड़ा होना है. Not that regiment, right? At the end of the day, he's a fun-loving young fellow who loves this cricket.
Cricket has given him everything. Thankfully, he's got a rainfall when it comes to money that he's making. And at times he would want to lose his way. Probably एक लड़का कोई भी हमारा छोटा भाई हो, घर में बैठे हो, लाइक रात को पार्टी करके 3 बजे तक नहीं आएगा, अगले दिन सुबह माँ डांटेगी, बोलेगी क्या कर रहा था 3 बजे तक रात को. इसका मतलब ये नहीं कि वो कल रात को वापस बाहर नहीं जाएगा. वो लड़का उसके उसके नेचर में है कि पार्टी करना है बाहर जाके, राइट. तो एक 25 साल के लड़के को हम क्या बोलोगे. So this is the reality of it. Okay, that at some point that's where is the coach. राहुल द्रविड़ को क्रिकेट बैटिंग नहीं सिखाना है इनको. आप बैटिंग अंडर 19 लेवल पे सिखाओ, अंडर 17 लेवल पे सिखाओ. यहाँ पे why Ravi Shastri worked is because he was seen as a friend to these boys. He's a guy who would sit with them. Come, okay, whatever you want to drink, let's have a drink. Let's sit down across the table, have a chat with each other. They used to trust him. They used to open up to him. You got to be a friend to these kids. आप उनको ये बोलोगे ना कि मैं तेरे से बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाऊंगा, उनको इस बात का डर नहीं कि पैसे नहीं आ रहे, करियर कर नहीं. फ्रेंचाइजीज दैट दे आर प्लेइंग फॉर इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग फॉर देम. ये लड़के ना, आप किसी भी क्रिकेटर को पूछ लो भाई तेरा टॉप प्रायोरिटी क्या है, तो कोई भी आपको क्रिकेटर जो अच्छे लेवल का क्रिकेटर है, ऐसा कौन सा क्रिकेटर आपको जो बोलेगा मुझे रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलनी. ऐसा कोई क्रिकेटर है जो नहीं बोलेगा आपको. हर किसी को टेस्ट क्रिकेट खेलना है, ठीक है. वो एस्पायर करता ही है कि भाई इंडिया के लिए खेलना है, टेस्ट क्रिकेट खेलना है, बड़े लेवल का. तो इसमें क्या होता है ना, आप कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी में द कैरेट आल्सो हैज टू बी ऑन द टेबल वेयर समबडी सिट्स डाउन with an arm on the around the shoulder and says, this is the story of Ishan. I'm telling you, Ishan may have partied and he may have like kind of had some bit of fun, and Rohit and Rahul took it sternly and they were very strict about it. And some of this I believe has also come in the media, right, in the reports. So much of that is also Rahul's job to sit down with him and take him into confidence. Similarly, someone like Shreyas, again, with Ishan, it's a carrot policy. With Shreyas, it has to be a stick policy. Where some things are not working for you, you need to sit down with Shreyas and tell him that, listen, boss, that one thing that we expect you to do is stand there, when you are playing a test match in India. How many balls? I was reading in Sahil's copy. How many balls did he face? He faced in 2 test matches, 4 test innings? 51. 50, am I right? 50 each in 3 innings. 50 each and 50 in 3 across 3 innings, not 4. No, 50 each and 3 innings. In 3 innings or 4? 3 innings. Oh, he's played 50 balls in each innings. 50 in each innings. 3 out of 4. Yeah. So that's where you're going. So if you're my premier batsman, and if you're not standing for me out there in matches that are being held at home, where I expect you to, and especially in a scenario where my top batsman is not available for me, then where do I expect you to contribute anything? Where am I expecting anything from you then? So, these are messages that have to be put out sternly. These are the practicality. This is the practicality of it. This is the reality side of it. The larger picture, the big picture has to be that Indian cricket has to take a call on this, that, you have to, ye IPL, पैसा वगैरह वगैरह जो है ना, this is only going to grow. This is not ending. This is not really ending at any point in time. This is going to have far more serious effects. And you've got to be very practical in setting a benchmark that the player has to show the maturity levels that are required to be part of playing for India. You set the benchmark high. मैं बताता हूँ, विराट कोहली, after he won the 2008 7-8 का जो अंडर 19 वर्ल्ड कप था, between then and between 2011-12 आप विराट कोहली को देखो और 2012 के बाद के विराट कोहली को देखो, फर्क देखो ना. He put the price on his own career, which is why you got the product. BCCI, selector, किसी ने कुछ नहीं किया. The product that Virat Kohli is a product of his own determination, is a product of his own will and character, right? What BCCI needs to do is set that. There was for the longest time, Rohit Sharma did not take his test career seriously, right? Suddenly, at the swan song of his career, he realizes that if people have to remember me, then they need to remember me for the quality of cricket that I've played. And that quality lies in red ball. So it took him all this while to understand that. And that's why you can see him putting a price on his career.
So, kind of there has to be some kind of benchmark set by the BCCI. But that's, as I said, if wishes were horses. Okay, so we've discussed at length about Shreyas Iyer, Jadeja, KL Rahul, and Bumrah, and we had a long discussion around Shreyas Iyer and his case, whether he's injured or dropped or what it is. But for better understanding, would request all our viewers to go through Sahil Malhotra's copy on Cricket Next. Would request our producer to please paste the link of Sahil's copy in the chat box so that our viewers can read all the things in detail. And for now, let's move to our rapid fire round. We'll pick the first question, and here we go. First one's from Sports Fan. Why team management is so scared to drop players and use injury as excuse? Sports Fan, we discussed this at length, and I would request you to please go back a little in this live session and you'll find your answer. Next question, please. Dinesh Singh's writing, Ishan Kishan playing next Ranji game. Is it true? Sahil, any update on that? अभी तो आज डे 1 हुआ है आज के गेम का. अभी तो झारखंड खुद नहीं सोच रही होगी. फॉर देम इट वुड बी अबाउट, आई थिंक झारखंड आर प्लेइंग सौराष्ट्र एंड चेतेश्वर पुजारा ने वहीं सैकड़ा लगाया है आज. तो अभी तो पुजारा से डील कर लो यार. बट अभी आई हैवंट हर्ड एनीथिंग ऑन ईशान yet about him kind of joining the squad. I haven't heard anything, and probably our colleague Soumya Kapoor, the Jharkhand specialist, would know better on him. So I haven't heard anything yet, but अभी it's very unlikely यार. मतलब क्या चल रहा है ईशान के मन में, क्या जाने. मैच कहाँ हो रहा है? अगला मैच झारखंड का? झारखंड का अगला मैच आई थिंक एट होम. ये वाला एट होम है, नेक्स्ट इज अवे. आई एम नॉट श्योर, आई जस्ट चेक. आई थिंक ये वाला एट होम है, नेक्स्ट इज अवे. मैं देख रहा था बड़ौदा से डायरेक्ट फ्लाइट है क्या? Okay. Vian Singh's next match is in Rajkot, Pujara's home ground, and after that in Ranchi, where Pujara scored a 200 in partnership with Saha against Australia. So, what's the fuss in picking Pujara? He scored 100 today. Okay, we've got a number of questions around Pujara, and this question has been coming on and off in all our live sessions. We need one answer that can help all our viewers understand the Pujara. Before we need talks on Pujara. Sorry, my bad. Saurashtra are playing Rajasthan. I confused it with Jharkhand. Look, it's a straightforward answer. You're not going. I don't think this management is going back to the Pujara and Rahane. I mean, that's done. I think that is done. They have to look forward. I mean, there's no point going back to a Pujara or a Rahane as a quick fix solution. You have to think forward. You have to look forward. This is a fresh WTC cycle, and you have to look to groom players, to replace the likes of a Pujara and Rahane. So there's no way you can go back to them. I mean, it's great that Pujara is going there and scoring 100. Rahane, of course, didn't score, just got out for one. But again, that's the point. You just cannot go back. The sentimental value of it is all fine. That Pujara at his home ground, you probably would have to love to see him. But that train has passed. That bus has passed for me, and you have to look forward. The new fresh WTC cycle, that is the way forward. The management has gone. There's no point going back. Okay, let's move to the next one. Introspects writing, with such chaos going on, I have full faith in England to win the series. Okay. Next question, please. Next comment. Ankar Biswas saying, sad part is that nobody talks about rotation policy, workload management, break, injury during IPL. Shri, you want to say anything on this? नहीं होने वाला. Why should anybody talk about rotation policy, workload management, break, injury during IPL? It's a professional league. Those 2 months, those 3 months, the player, तुम्हारा contract है बॉस. तुमको ये कोई वैसे wish list पे नहीं काम चल रहा है. These are hardcore contracts which are signed between the player and the BCCI and the franchise, where those 3 months the player is the responsibility of the franchise. The franchise is paying top money, top dollar for it. अभी वो rotation, अगर वो workload management वगैरह वगैरह अगर कुछ नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि whose responsibility? It is not the responsibility of, mind you, don't blame the player, don't blame the franchise, don't blame the BCCI. The BCCI has to come forth, put forth when it needs. वो करते हैं बराबर, जब उनको जरूरत होती है ना, वो बराबर करते हैं.
और फिर वो ऐसे मौके आते हैं जब वो मतलब फिर वो इग्नोर करना शुरू कर देते हैं. आई डू अंडरस्टैंड द importance of the question, but please understand that I can't name individuals, I can't name franchises, and I'm not going to name players. But there are players and there are franchisees who are there are franchisees taking care of their players throughout the year, not just for those 3 months. I can tell you there are players who at any given point in time in a year, if they face any problem, whether it is health related, injuries, care, whatever it is, personal problem, whatever, they are willing to go and discuss this more openly with the franchise that they are playing for than somebody in BCCI. बीसीसीआई में कोई छोटा मोटा ऑफिस बेरर कहीं बैठा रहेगा, उसको लगेगा अरे यार ये मिल गया, अभी मैं इसको ना कैसे इस इंफॉर्मेशन को यूज करूं. तो प्लेयर्स आर ऑल्सो स्केर्ड ऑफ इट. वो जाके वो अपने फ्रेंचाइज में बिलीव करने के लिए रेडी है. और ये चीज आगे जाके और प्रोफेशनल बनेगी. आज ये अंकुर विश्वास का सवाल है. वो अंकुर विश्वास, इसका जवाब मैं आपको इस तरीके से देता हूं कि आईपीएल एज एन इकोसिस्टम सिर्फ 15-16 साल पुराना इकोसिस्टम है. मतलब आप ये मान के चलिए कि एक टीनेजर है, ये जो स्पेस है ये इवॉल्व हो रहा है. 15 साल के लड़के को ज्ञान जो होता है वो कम ही होता है, वो भी 21 साल होने तक के, तो उसके बाद में इवॉल्व होना शुरू होता है, राइट. उसी हिसाब से आप आईपीएल को भी देख लीजिए. 15 साल 16 साल का जो आईपीएल है वो अभी भी अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक डेवलप हो रही है. आप इस लीग को थोड़ा और सेटल होने दीजिए. ये लीग जब इवॉल्व होगा, ये और लंबा होगा और बड़ा होगा, तो इसमें अंडरस्टैंडिंग भी उतनी गहरी आएगी. धीरे धीरे जो है लोगों को समझ में आएगा कि इसको हमें बेटर यूटिलाइज कैसे करना है. वर्कलोड मैनेजमेंट बोलो, आप जो भी टर्म्स यूज कर रहे हो, ये धीरे धीरे इवॉल्व होगा. बट एज ऑफ टुडे इमीडिएट बेसिस पे अगर किसी को अगर इस चीज पे ध्यान देना है तो दैट हैज टू बी बीसीसीआई. Introspects writing with such shoddy injury management and players skipping Ranji and Test to be fit for IPL, I am well assured the wait for next World Cup will not be just 28 years. Okay. वर्ल्ड कप ही नहीं होगा. आप 28 ईयर्स की बात कर रहे हो. अगला वर्ल्ड कप ही नहीं है 50 ओवर का. 20 ओवर का वर्ल्ड कप है. कोई नहीं देखने वाला 50 ओवर क्रिकेट. ये पूरे साल में तो 2 ओडीआई खेल रहे हो तुम. Yeah. Well, we'll talk about that in some other live session because we have a lot of questions around that as well. For now, we'll stick to the questions around Bumrah, Shreyas Iyer, Jadeja, and KL Rahul, and obviously the team announcement. Right now, Shubham Sharma is saying Bumrah should rest for fourth test. It will also allow us to develop fourth pacer behind incumbent trio. Well, Vineet, I was talking about this only. मैंने यही कहा था आपको कि यही कुछ सवाल हैं जो चल रहे हैं आजकल हर जगह. Once again, I would request you to give a brief answer to Mr. Shubham Sharma. Very brief answer to Shubham. यार तीसरा टेस्ट मैच तो खत्म होने दो, शुरू तो होने दो, उसके बाद चौथे के बारे में सोचो ना. आप तीसरा शुरू होने दो, खत्म होने दो. That's it. शुभम, अभी आप तैयारी करिए तीसरे टेस्ट मैच की, उसके बाद हम बातचीत करेंगे फोर्थ के बारे में. Vian is saying here Stark, Cummins and Hazelwood are playing continuously for 5 years in all formats and we panic after 2-3 games. Strange. Sahil? I agree यार. मतलब हम तो अपने एथलीट्स को ऐसे फ्रेजाइल डॉल्स की तरह ट्रीट करते हैं कि अरे बुमराह के 2 मैच हो गए, ब्रेकडाउन हो जाएगा, तीसरे में बिठा दो. ऐसा नहीं होता यार. वो भी मतलब जसप्रीत बुमराह से अगर पूछोगे 10-12 साल की उम्र से क्रिकेट खेल रहा है और सिर्फ तेज बॉल फेंक रहा है. मैं तो अपनी वो स्टोरी आज तक भूलता ही नहीं हूँ. 101 बुखार के अंदर करनेल सिंह स्टेडियम में वो जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट हॉल लिया था मेरे सामने रेलवेज के अगेंस्ट रणजी ट्रॉफी में, when he was a nobody. And he's not going to sit out of games because he wants to preserve his body. He's going to go full throttle. And I'm expecting him to play all 5 test matches because you want to win this series. या बॉडी को प्रिजर्व करना है तो फिर घर बैठो ना यार. मतलब ये सजेशंस भी क्यों आते हैं? क्रिकेट खेलना है यार. इंजरीज तो आता रहेगा. But at the end of the day, you have to win matches, win series, stay relevant in the WTC final cycle. नहीं क्वालिफाई करोगे फाइनल के लिए तो कोई नहीं पूछने वाला बुमराह को तीसरे मैच में बिठा के उसका करियर लंबा कर दिया आपने. किसी को फायदा नहीं होगा उससे. Well, yes. Next comment, please. This one's for Srini from Priyanshu. Some big changes in Indian cricket after, some changes were expected or are expected after T20 World Cup. Okay, like change in captain and coach. Any update on that, Srini? I mean, होना चाहिए. हाँ, होगा क्या वो नहीं पता.
सो क्या चेंजेस होना चाहिए? ऑफ कोर्स होना चाहिए. होगा क्या? वो बीसीसीआई लॉटरी है बाबा, लगी तो लाख की. Rider लिख रहे हैं, we are really looking for new head coach, then Of BCCI course, should start looking for it from now. of course, not now. It's already too late. They should have started this last year. Yeah. Hmm. वो Okay. ऐसा था, वर्ल्ड कप खत्म, वर्ल्ड कप जीत जाते हैं फिर कोच ढूंढेंगे, उसके बाद में इंग्लैंड सीरीज जीत जाते हैं फिर कोच ढूंढेंगे. फिर अभी वो 24 T20 वर्ल्ड कप में शिफ्ट हो गया. T20 वर्ल्ड कप जीत जाते हैं फिर कोच ढूंढ लेंगे. Okay, और अगर वो भी वो नहीं अभी मैं हुआ बोलता रहा हूँ, तो वो उसके चलते बाद चलते ऐसे हो जाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया टूर करके आ जाते हैं, फिर चेंज कर लेंगे. वो भी हो जाएगा, देखिए. Yeah. Next question, please. Dinesh saying Ishan Kishan is centrally contracted player. He need to play domestic. दिनेश, हमने काफ़ी बातचीत कर ली है. देयर वाज आल्सो दिस वन स्पेशल शो जहाँ पर हमने ईशान किशन के बारे में बात करी थी. अगर आपने वो शो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वो देखिएगा ज़रूर. उसमें साहिल मौजूद थे, जेमी थे एंड ताउस थे हमारे साथ उस शो में जुड़े हुए. वुड रिक्वेस्ट आवर प्रोड्यूसर टू प्लीज पेस्ट द लिंक ऑफ दैट शो सो दैट मिस्टर दिनेश सिंह कैन गो एंड वॉच दैट. टेक्निकल इशू है इस क्वेश्चन में, तो वो मैं ऐड करना चाहता हूँ. दिनेश भाई, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सेंट्रल है. दैट कॉन्ट्रैक्ट कवर्स यू टू प्ले फॉर इंडिया, बिकॉज देयर आर नो स्टेट लेवल कॉन्ट्रैक्ट्स राइट नाउ इन इंडियन क्रिकेट राइट नाउ. तो कोई कंपल्शन नहीं है उसको डोमेस्टिक खेलने का. एज आई से वो लीगल बोल वैसे आईपीएल भी डोमेस्टिक क्रिकेट ही है. हाँ, नंबर तो T20 आई में नहीं, T20 में ही जुड़ते हैं. फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात कर रहे हैं भाई साहब. Okay. Next one, please. Yatrika Singh, BCCI administrator, failing to compromise. England compromised with Hales and he won them trophy. West Indies learned their lessons and had brought their main gun for T20, but BCCI is still stubborn. Beneath. I don't know कि compromise किस level पे आप करोगे. It's about the Hales वाला तो situation ही अलग था. I mean, he was thrown out basically, because of some other activities. BCCI is stubborn. I wouldn't say BCCI are not pragmatic enough. That is what it is. The selection and the extension of Rahul Dravid as a coach is pretty much, the prime example of that, which Rini had mentioned earlier. Look, there are changes to be made. वही तो दिक्कत होती है. BCCI इतना अपने में वो मात्रा नहीं रख पाती है to make those sweeping changes and bring in a few more pragmatic ideas or pragmatic players. उस हिसाब से सोच वो नहीं हो पा रहा है. And look at how baseball is pretty much has spooked Indian cricket in a way. They have been very pragmatic. ECB for a change. India have not been. So there are examples for you. The safety first approach. I mean, you saw what happened in the Vizag Test with Mukesh Kumar selection. I mean, that's basically microcosm of what has been the issue with BCCI from these, from a cricketing point of view, for that matter. और वो ही आपको extension दिख रहा है. Okay. Next comment, please. We'll just take last two questions and we'll wrap this live show. Shubham Sharma is saying Shreyas anyhow is at best ODI player, nothing more than that. Better to look at Sai Sudarshan at 3, Gill at 5. Michael Clark should be next coach. Quick takes from each one of you, and I'll first go to Srini and then Sahil beneath. इसको बीसीसीआई के ऑफिस में एक कमरा दे देना चाहिए. डिसाइड कर लिया, माइकल क्लार्क को इसने आइडेंटिफाई भी कर लिया. कैसे? मतलब मेरे को तो, बट ठीक है. आई मीन, आई एम श्योर दिस गाय नोज समथिंग अबाउट माइकल क्लार्क. आई हैव नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट माइकल क्लार्क इज एज अ कोच. रही बात साई सुदर्शन की, यार ये कौन से फॉर्मेट की बात कर रहे हो? मतलब ओडीआई की बात कर रहे हो या कौन से? इन्वेस्टेड श्रेयस अय्यर एनी हाउ इज एट बेस्ट ओडीआई प्लेयर, नथिंग मोर देन दैट. ऐसा मत बोलो यार. ये तुम लोग रणजी देखे हो कभी? मतलब कुछ आइडिया है रेड बॉल क्रिकेट क्या? मतलब प्लेयर ऐसा बुरा नहीं है यार, वो ठीक है, बुरा टाइम चल रहा है. मैं ही नहीं कह रहा हूँ बिठाओ मत, बट ऐसे बदनामी मत करो. और बेटर टू लुक एट साई सुदर्शन एट नंबर 3. नो, नंबर 3 वाज ओनली वन मैन. वेट फॉर हिम टू कम बैक. Number 4, sorry. Gill at number 5. Gill has never been a number 5 batsman. He's always been a number 3 batsman. Then you forced him to become an opener. फिर तुमको ओपनर मिल गया तो then you forced him to become a number 3 again. अब तुमको नंबर 3 पे कोई और चाहिए तो you're forcing him to go to number 5. वो मतलब ऐसा मत करो. So I don't see any logic.
ओके, वेल श्रेयस अय्यर के साथ तो ऐसा है कि अगर वो वैसे स्कोर बाय अच्छा द वे, कर लेते, just to give you an idea, गिल विल बी, थोड़े दिन की बात है, बाद में तो गिल और यशस्वी को ही ओपन करना। ओके, विनीत, हमने ये अक्सर डिस्कस भी किया है कि श्रेयस अय्यर अगर स्कोर कर लेते तो ऑब्वियसली कुछ और ही चर्चा हो रही होती, कुछ और ही डिस्कशंस चल रहे होते, फिर तो वो मैच विनर बन गए होते, फिर तो वो बेस्ट क्रिकेटर होते स्पिन को खेलने के लिए, बेस्ट टेस्ट प्लेयर भी वो बन जाते। जस्ट उनके पहले 2 टेस्ट मैचेस नहीं अच्छे हुए तो उनको एट बेस्ट ओडीआई प्लेयर ही रखा गया है। So, what's your opinion on this Sai Sudarshan 3, Gill at 5? Let's not talk about Michael Clark. I'll keep that part, only for No, at Sahil to answer, number so that we have two number different answers. तो नंबर 3 की अगर आप बात करें, अभी इफ यू लुक एट द रीसेंट रिकॉर्ड ऑफ नंबर 3s इन इंडियन क्रिकेट डोमेस्टिक इंडिया ए जो खेले हैं, मोर देन साई सुदर्शन इट हैज बीन देवदत्त पडिक्कल। या इस स्कोर 300s फॉर कर्नाटका नंबर 3 इंडिया ए साउथ अफ्रीका ए वाला जो खेला था वो एज एन ओपनर 100 मारे थे, नीचे आके 117 मारे थे। तो साई सुदर्शन से आगे मैं पडिक्कल को रखूंगा, बट अगेन बहुत दूर की बात है, अभी तो वो सब नहीं करेंगे। बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि यार साई सुदर्शन की बात करें, अगेन अ वेरी गुड प्लेयर, प्रॉमिसिंग, अगले 5 साल में इंडिया डेब्यू करेंगे। देवदत्त पडिक्कल could very well be around that thing. Gill at number 5 doesn't make no sense to me. Just absolutely no sense. As Srini mentioned, उनको आप ओपन करते हुए देखेंगे, 3 नंबर अभी खेल रहे हैं हाल फिलहाल के लिए। माइकल क्लार्क, no comments. माइकल क्लार्क ने कोचिंग किया है क्या कुछ? साहिल, माइकल क्लार्क, वही मैं सोच रहा हूँ, माइकल हाँ, क्लार्क का मैं ऐसा कुछ कोचिंग असाइनमेंट वगैरह कुछ देखा ही नहीं, और मैं तो इतना कमेंट्री बॉक्स में भी उसको इतना ऑफर नहीं सुना, तो मेरे को तो this statement makes little sense. Maybe he could have said like Andy Flower or a Justin Langer maybe, but you know, no matter how many faces we get, how many interviews BCCI conducts, Ravi Shastri has spoiled this Indian cricket team for good, क्योंकि आप उनके बियॉन्ड जब देखोगे ना, वो जो शास्त्री वाला एरा था ना, but I don't think it will ever return in Indian cricket. The way he kind of let the youth express, और जो एक वो श्रीनी बोलते हैं ना बार बार, एक बड़ा भाई टीम के अंदर था, मुझे नहीं लगता ऐसा बड़ा भाई इंडियन क्रिकेट टीम को कभी मिलने वाला है आगे। हाँ, अगर किस्सा आशीष बताता मेहरा हूँ, पूछते हैं कि मैं प्लेयर का नाम नहीं लूंगा, श्रीनी, बिफोर वी प्लेयर लिसन का टू नाम दिस नहीं ना, लूंगा, शुभम एक शर्मा का मिनट, कमेंट है, वो हम एक बार देख लेते हैं। वो क्यों कह रहे हैं कि क्लार्क को क्यों होना चाहिए। शुभम शर्मा ने अपना आंसर दे दिया है, सो जब हम लोग डिस्कस कर रहे एंटीडोट थे फॉर बाज मैकलम, और बिकॉज ऑफ 2015 World Cup final Ashes 2013. अच्छा, आई डोंट नो, okay, so now I have we've got the I was answer just to the telling you question. one Ashwin, please Ravi go का ahead बात with चल your रहा था, story. so I won't be able to name the player, but there's a very senior India player जो पिछले कुछ सालों से, जब से वो इंडिया के लिए खेल रहा है, उसका एक ट्रेडिशन है, वो जब भी ग्राउंड पे रहता है, तो पहले तो रवि कोच होते थे, फिर सॉरी कमेंटेटर थे, फिर कोच बने, फिर अभी कमेंट्री कर रहे हैं। तो जब भी ग्राउंड पे रहते हैं रवि, चाहे वो कमेंट्री, वो स्टूडियो, मतलब वो आप ग्राउंड पे खड़े होते हैं ना, स्टूडियो से बात कर रहे हो कनेक्ट होके वगैरह, या तो कोच जब खड़े रहते थे, तो ये जो प्लेयर है, ये ग्राउंड में जहाँ पे भी रहेगा, वार्म अप कर रहा होगा, दौड़ रहा होगा, आएगा, वो जाते जाते एक बार रवि के कंधे पे ऐसे हाथ रख के जाता है। तो एक बार पूछा था कि क्यों, बोलता बड़ा भाई यार गुड लक, टच करता हूँ तो एक गुड लक का ये मिलता है। तो वैसा, सी दैट इज हाउ दे लव हिम, दैट इज द एक्सटेंट टू व्हिच दे लव हिम। एक क्वेश्चन आपसे, क्या वो प्लेयर अभी टीम के अंदर है? अरे छोड़ो, अरे मैं क्योंकि राजकोट में चेक करूंगा ना कंधे पे हाथ कौन मारता है इसीलिए पूछ रहा हूँ। Okay. Okay, last question and then we'll wrap this up. This one's for Sahil from Priyanshu. Devdutt Padikkal looks a good option for future. Thoughts? I think Devdutt Padikkal wasted his couple of years at Rajasthan Royals. I don't know why he was purchased in the first place when you already had Josh Butler and Yashasvi Jaiswal at top of the order. But now that trade has happened, Avesh Khan coming to to Rajasthan Royals, yeah. and Devdutt Padikkal going to LSG, KL Rahul saying I will bat in the middle order, probably De Kock and Devdutt Padikkal at top of the order.
ये साल आपको एकदम वो धागा खोल देगा, क्योंकि वो जिस तरीके से बैटिंग कर रहा है ना रणजी में, विनीत ने भी कहा आज भी उसने आई थिंक 150 मारा है, कुछ मारा तमिलनाडु को अगेंस्ट इन चेपॉ, वो देखना आपको, यू विल सी अ ब्रिलियंट। और वो जो आरसीबी के लिए उसने वो सीजन में 3 सीजन पहले जो उसने बैटिंग किया था ना, क्यों किया इन लोगों ने, रिलीज क्यों करा उसको, मतलब वो तो क्या गन प्लेयर था यार, मतलब क्या चाहते हैं आरसीबी, पता नहीं क्या सोच रहे थे ये लोग, लाइक आई हैव नो आइडिया, बट वो मेरे को मजा आता था उसको देखने में। Okay, so that's that. Thank you so much, Srini, Vineet, and Sahil for joining with me. And all our viewers, let me tell you that we'll be posting all the live updates about our team's announcement for the third test match. And we'll keep you posted with all the latest updates. So you stay tuned with Cricket Next. Thank you so much. फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।